Hello, my dear students. This video especially I made for the share and dividends of class 10 students. I have taken the reference of the book Understanding ICSE Mathematics by ML Agrawal, class 10. This chapter, share and dividends, the meaning of shares and the other terms which I will explain here in this video, and be concentrate when you watch this video because this is very important. This chapter is very important for you for the board examinations because the two questions comes in the examination. Therefore, you must watch the full video, and the next part also I will make. So you must watch that also. What is share and dividends? Shares एक वैल्यू होती है. शेयर एक मीन्स ऑनलाइन आजकल हो रहे हैं जिनको कि मार्केट में सर्कुलेट होते हैं, एंड द फैक्ट्री के शेयर्स होते हैं, बहुत सारी चीजों के शेयर्स होते हैं. तो हाउ इट कम्स इनटू द मार्केट, जैसे फॉर एग्जांपल ए पर्सन वांट्स टू ओपन द स्मॉल शॉप. Then he has the money or she has the money to can open the shop. But a person wants to open the big factory, wants to establish a factory. In that case, the person has not the huge amount, such amount that he can invest in the factory. So he takes from the other persons, and that is also not sufficient. तो इन दैट केस वी टेक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या करती है कि उनसे एस्टिमेटेड वैल्यूज लेती है कि हाउ मच मनी यू वांट टू इन्वेस्ट इन द फैक्ट्री. मींस इन केस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्री, रॉ मटेरियल एंड मशीन्स, लेबर चार्ज, प्रोडक्ट, ये सब क्या चीजें होंगी, उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू एंड एवरीथिंग अबाउट द फैक्ट्री द गवर्नमेंट आस्क्स. देन द गवर्नमेंट इश्यूज द बॉन्ड्स in the public through online, through offline. The previous one offline, but nowadays online. ये जो bonds issue करती है कंपनी के नाम पे, तो that bonds known as the share. और there is a fixed value of the share. The government fixes the value of the shares, and that value, fixed value of the shares, known as the nominal value. शेयर पे एक वैल्यू लिखी होती है, दैट वैल्यू इज ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, मींस द बेसिक प्राइस ऑफ द शेयर दैट नेवर चेंज. मतलब दैट इज सपोज द 10 इयर्स पहले किसी शेयर की बेसिक वैल्यू 10 रुपीज है, तो नाउ आल्सो टुडे आल्सो द बेसिक वैल्यू इज ₹10. दिस इज द शेयर. तो शेयर, अब शेयर होते क्या है कि मींस द पर्सन्स परचेजेस द शेयर्स, पब्लिक जो भी हम सब लोग हैं, परचेजेस द शेयर फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड देन थ्रू ऑनलाइन, एंड देन अकॉर्डिंग जब फैक्ट्रीज डेवलप करती, राइज करती है, इन दैट केस द प्राइस ऑफ द शेयर आल्सो फ्लक्चुएट. यू कैन से द कैन इंक्रीज और कैन डिक्रीज. ये जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्राइस में होता है, दैट इज दिस प्राइस नोन एज द मार्केट प्राइस. इसको मार्केट प्राइस कहते हैं. नॉमिनल मींस बेसिक प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज और कैन नॉट बी डिक्रीज. यू कैन से इन द जनरल वेरी सिंपल सेंस, दैट इज द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस मे बी वेरी बट कॉस्ट प्राइस नेवर चेंज. तो उसी तरह से इसमें भी nominal value means the basic price, or you can say the face value also, the one more name, that is face value, nominal value, list price, basic price. These are called these are never changed. Only the market value at which price the person purchases the share from the market. Okay, but when you go to the market, suppose you have ₹1,000 and you go to the market and purchase the one product, and suppose that that is the cups,
are bottles, this type of glycerin bottle, hand sanitizer bottle, glycerin bottle, anything, and the cost of this sanitizer is rupees 50. This cost of this sanitizer is rupees 50. Then and you have the rupees 1000. So how many bottles the shopkeeper will give you? Shopkeeper will give you 1000 upon 50. 1000 upon 50 means how many bottles? 20 bottles the shopkeeper will give you. Okay? 20 bottles ही दोएगा, उससे ज़्यादा देगा नहीं. अगर 1000 rupees if you have in your hand, rupees 1000 you are giving 1000. तो and 50 rupees की bottle है, तो how many bottles you will get? Only 20 bottles. 1000 upon 50. तो ये what is 1000 and what is 50 and what is 20? ये तीनों चीजें क्या है? 1000 you are investing. You are investing 1000 rupees क्योंकि तुमने इन्वेस्ट किया है. तो you are this is called investment. Okay? You are investing rupees 1000 and he is giving at rupees 50. तो this is the market value rupees 50. वो दे रहा है market value पे. And how many bottles? 20. 20 what is that? 20 means the number of bottles. You can say the number of shares. अब इसको अगर हम शेयर के वर्ड में लावे तो if you have the rupees 1000 to invest and the share cost market value of the share is rupees 50, then how many shares you will get? Number of share is equal to जितना इन्वेस्ट किया है डिवाइड कर दो मार्केट वैल्यू से, तो 1000 upon 50 you will get the 20 shares. So it means the first formula of the number of share will be investment upon market value. This is the first formula, very first formula. इसके बगैर ये सबसे पहले निकाला जाता है in every question of the share topic. Number of shares is equal to investment upon market value. Clear? So dividend ajam. Now market value, there are three types of market value. Three types. ये I have made here three types. In some time the market value increases means more than the nominal value. Nominal value हमने बताया, nominal value is the price, basic price or fixed price that never change. Market value can change, can fluctuate. कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. तो in that case market value is more than the nominal value. तो this market value is known as the at premium. इसको कहते हैं at premium. यह above par, इसको above par भी बोला जाता है. Above par. Okay, both are same. How to find in that case the at premium? And at premium means the at premium of 10%, at premium of 20%. तो ये जो 10%, 20% है, that you will take the considering the market value on the nominal value. मतलब कि प्रीमियम सपोज 10% है तो NV1 plus P by 100, तो it will give the market value, means बढ़ी हुई, the increased value of the share. Sometimes the premium will be given in the rupees. Suppose only rupees, the at premium of rupees 20, so and the nominal value is rupees 100 in some cases. So you will add 20 rupees in the 100. So 100 plus 20, that will be the 120 rupees is the market value. Second, when the market value is equal to nominal value, this is called at par. In some question it is written the shares, the number of shares, means suppose the rupees 100 share at par. At par का मतलब होता है कि market value और nominal value both are equal. तो market value is equal to nominal value. तो उसमें तुम्हें कहीं प्रीमियम कहीं परसेंट कुछ नहीं दिया गया होगा. तो you will get this one. The third one, when the market value is less than the nominal value. कभी-कभी nominal value rupees 100 है और market value हमारी 90 rupees. जैसे बहुत फैक्ट्री में लॉस में चली गई तो market value उनको बस they have to
द सेल ओनली एट एनी कॉस्ट, वो चाहे लॉस हो चाहे जो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो वो कुछ लॉस में ही सेल कर देते हैं। तो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड एट डिस्काउंट, इसको कहते हैं एट डिस्काउंट। तो NV 1 minus D upon 100, if discount is given in the percentage, so market value will be NV 1 minus D. So if discount is given in the rupees, so directly you subtract the discount from the nominal value, then you will get the market value. So these are the three types of the market value. Now one term is here, that is dividend. Dividend is very important. There are two types of dividends. Dividend may be in rupees or dividend may be in percentage. Dividend if given in rupees, then no problem, it is in rupees. Dividend given in percentage, then it is called rate of dividend. इसको rate of dividend कहते हैं, जिसको हम कहते हैं RD. इसको in this way you can say the R into D means RD, rate of dividend. It is in percentage. But what is the meaning of the dividend? Dividend means when the factory is in profit. Factory जब profit में होती है, when the factory or any industry is in profit, then he gives some percentage as profit. Profit में से, from the profit, some percentage from the profit to his shareholders. shareholders जिसने शेयर लिया है, सपोज हमने शेयर लिया 100 शेयर्स, तो कुछ परसेंटेज शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो दैट परसेंटेज मींस जो इन रुपीस में जाएगा, जैसे सपोज करो 2% हमको मिला, मींस in my hand there are the 100 shares and the dividend is declared, that is 2%. And nominal value is rupees 100. Dividend always calculated on the nominal value, not on the market value. So dividend calculated on nominal value. So nominal value is rupees 100 and 2% dividend is given by the company to the shareholder. So it means the only 2 rupees will get. One share will get the only 2 rupees. और हमारे पास अगर 100 shares है तो हमको कितना मिलेगा? 100 into 2 means 200 rupees I will get. Means customer will get या shareholders will get according to their number of shares, the dividends. तो rate of dividend always will give in percentage. ज्यादातर percentage में देते हैं, नहीं तो कभी कभी रुपीस में लिखे रहते हैं कि ये रुपीस में डिविडेंड है। This is also known as the annual dividend. इसको annual dividend भी कहते हैं। A लगा दिया जाता है, in short it is written as AD, annual dividend. And also it is known as the AI, annual income. इसको annual income भी, in some question it is known as the annual income. Then one more term is given, rate of return oblique yield, rate of return. What is the meaning of rate of return? Rate of return means the suppose a person purchases the share at rupees 1000. 1000 में किसी ने शेयर परचेज किया. For me, suppose example, I have invested rupees the 1000 for purchasing the shares. And when the price of the share increases and I sell these shares, इसको हमने सेल किया, and I get rupees 1200. 1000 हमने इन्वेस्ट किया था, but after some days या after some months, after some time, I get rupees 1200 when I sell these shares. जब प्राइस बढ़ा तो हमने शेयर को बेच दिया, मींस सेल कर दिया. तो in that case I get 200 rupees as the profit, but not given by the company. This profit dividend given by the company, but जो अभी हमने बताया कि on purchasing and selling, this only based on our brain, our means you can say the alertness कि मार्केट में प्राइस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो in that case I am selling the shares. तो this 200 rupees is the
रेट ऑफ रिटर्न, एंड रेट ऑफ रिटर्न इट इज इन परसेंटेज। तो 200 रुपीज कितना परसेंट हुआ किसका? दैट इज ओनली ऑन रुपीज 1000, मीन्स ओनली ऑन इन्वेस्टमेंट। This 200 rupees is the if you want to find the percentage of which of on investment. So 200 upon 1000 into 100, so it will be 20%. So 20% is the rate of return. So rate of return is the term in which the customer or shareholders gets in his own कह सकते हैं कि अलर्टनेस। सेम थिंग यील्ड, इसका एक और नाम भी है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे ही हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। द लास्ट वन इज द सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड इज द अनदर थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। सपोज पर्सन ए हैविंग द शेयर, या कोई भी पर्सन, ए पर्सन हैविंग द शेयर 10 शेयर्स या 100 शेयर्स ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए, एक कंपनी का इसके पास 100 शेयर्स है। ओके, आफ्टर सम टाइम ही सेल्स द शेयर्स, दीज 100 शेयर्स सेल कर देते हैं, एंड सेल करने पे व्हाट ही विल गेट? द सम मनी अमाउंट, and he gets the rupees suppose 20,000 for example। 100 shares है उसके पास कंपनी ए, and after selling these 100 share he gets rupees 20,000। अब बेच के उसके 20,000 आए, then he invest the same amount, मतलब 20,000 जितना भी मिला to in purchasing of other shares of other companies B। मतलब ए कंपनी के शेयर थे बट उसको अच्छा नहीं लगा, he sells these shares and invest the 20,000, मतलब जितना भी मिला in other company that is B। this amount जब ये हो रहा है, if this procedure is going on, मतलब ए से बी में, कंपनी ए से कंपनी बी में जा रहा है, this procedure is going on, in that case the selling amount is known as the sale proceed। इसको सेल प्रोसीड कहते हैं। सेल मीन्स सेल करना, प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ाना। अगर हम ये ना करते तो दिस इज नॉट मीन्स यू कैन नॉट से दिस इज द सेल प्रोसीड, तो वो अपना रख लेता, अपना कहीं और खर्च करता, उससे देयर इज नो प्रॉब्लम। बट ही इज इन्वेस्टिंग इन द अदर कंपनी आल्सो, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द सेल प्रोसीड। तो कभी कभी बोलते हैं कि फाइंड द सेल प्रोसीड, तो यू हैव टू गिव द आंसर द सेलिंग प्राइस मींस द जिसमें सेल किया है उसी को सेल प्रोसीड बोलते हैं। दिस इज सेल प्रोसीड। So by this way, in this video I have told everything about this, about the term, but formula also I want to tell you, there are only 3 formulae. The first one, number of share is equal to investment upon market value. This number of shares is equal to investment upon market value का मतलब means you can find any one if the two are given. If the two unknown variables are given, suppose number of shares are given, market value given, so you can find the investment. If investment and number of shares given, then market value you can find. If that these two are given, then number of shares you can find. Especially number of shares तो जरूर निकालने होते हैं, हर क्वेश्चन में निकालने ही पड़ेंगे कहीं ना कहीं से। And if it is not given, you will let as X. The second formula is annual dividend. हमने annual dividend बताया, it is calculated always on nominal value. तो अगर जैसे एनुअल डिविडेंड है तो इन दिस केस यू कैन राइट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू आरडी। आरडी मतलब रेट ऑफ डिविडेंड इनटू किस पे? नॉमिनल वैल्यू। तो दिस आरडी विल बी इन परसेंटेज, सपोज 10%, तो 10 अपॉन 100 नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी हो, नॉमिनल वैल्यू जितनी भी हो। ओके, तो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला एंड दिस इज द एनुअल डिविडेंड। तो here the 4 unknown variables 1 2 3 4, any 3 are given, you can find the fourth one.
Sometimes the RD not given, so you will let as in percentage, x%. You will not let as x, क्योंकि जो भी परसेंट में माना जाना है परसेंट में है, परसेंट में माना है, तो x% जब लिया तो x/100. ओके, you can get the value. The third formula is the rate of return. This is the rate of return. हम इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं RR, and this is in percentage is equal to, there are two formulae of rate of return. The first one is the RD into NV upon MV into 100, and this is in percent. तो ये जो रेट ऑफ रिटर्न जो निकलता है हमारा रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज द RD, मतलब कि सपोज 10%, तो 10/100 इंटू NV जो भी वैल्यू हो, MV जो भी वैल्यू, 100 एंड देन परसेंट साइन. क्लियर? One more formula, that is annual income upon investment, या हम एनुअल डिविडेंड बोल सकते हैं, एनुअल डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट into 100%. This is also the formula of rate of return. Both are the formula of the rate of return. According to question, you have to apply. In some question, if asked the market value, so you apply this one. In some question, not asked and you know the annual dividend and investment, then you can apply directly this one. So these are the formulae that you will use in the exercise, and nothing else there. इसके अलावा और कुछ नहीं है. And in this video, I'll tell one more thing. Very simple and very easy. Very simple and very easy. How to recognize the that is the shares, and ये नॉमिनल वैल्यू कौन सी होती है, मार्केट वैल्यू कौन सी होती है, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है. In that case, तो when you read the question, then in some question you will get the such type of word. I tell you, this is for example, by purchasing rupees 25 gas shares for rupees 10 each, a man gets 4% profit on his investment. तो इसमें लिखा है rupees 25 gas shares. तो इट एंड कहीं ये नहीं दिखा कि व्हाट इज विच रिप्रेजेंट मींस व्हाट इट रिप्रेजेंट, नॉमिनल वैल्यू है कि मार्केट वैल्यू. तो आई टेल यू द रुपीज विच इज गिवन द बिफोर द टर्म शेयर, this you will take as nominal value, and the rupees which is given after the word share, after the term share, then you will take as the market value. इसी तरह से रेट ऑफ रिटर्न भी परसेंट में होता है, रेट ऑफ डिविडेंड भी परसेंट में होता है. तो रेट ऑफ डिविडेंड इफ इट इज नॉट गिवन एनीथिंग बट इट इज गिवन the any percent given before the term share, then you will consider as the rate of dividend. Otherwise, rate of return at that will be given by the name, with the name. Okay, so if you do the questions, you will get the answers, and watch again and again this video to understand the terms and get the knowledge of these terms, especially market value, rate of return, sale proceed, number of shares, everything. In next video I will tell you the questions. Thank you.